So students, today we are going to discuss the operation amplifier. I hope you have all submitted the assignments, and I'm going to give you the overview of operation amplifier. It is the second last unit, that is the 5th unit, and I will also give you the numerical problems after this. First, to understand the theory of the operation amplifier, and मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जो है इससे डर जाते हैं एकदम, इसका सर्किट्स देख के और इसके न्यूमेरिकल्स देख के। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आई विल मेक इट वेरी वेरी सिंपल। फर्स्ट, अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो देयर आर टू वर्ड्स, ऑपरेशनल एंड एम्पलीफायर। सो व्हेन आई से ऑपरेशनल, it means it performs mathematical operations such as addition, subtraction, differentiation, integration, and other arithmetic operations. And there are one more word, that is amplifier. Amplifier means having positive gain. What is gain? Gain is output by input. Now, when output is greater than input, it means you are providing something and you are achieving bigger than that. Like you deposit your money in the bank and you earn interest from the bank. It means you are gaining something. And opposite of that means output is less than input. It means there is some loss. So 90% of the devices in the world are not amplifiers. They consume energy. They does not provide the gain, positive gain. So it is the main advantage of a device if it can perform like amplifier, means output is greater than input. You give it 1 and if the gain is 100, it will convert it into 100. means अगर मैं आपको 1 रुपया दूं तो आप convert करके मुझे 100 दो, तो that is amplification. So हमने last lectures में पढ़ा था कि BJT, FETs can work as an amplifiers also and as a switch, not FET, BJT. So this operational amplifier is also known as op-amp. और ये जो इसका इंटरनल सर्किट होता है, ये इंटरनल सर्किट पूरी तरह BJT से ही बनाया जाता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से. सो हमने देखा था कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से हमने गेट्स बनाए थे, लॉजिकल गेट्स बनाए थे, क्योंकि वो एज ए स्विच काम कर सकता है और वो एज ए एम्पलीफायर भी काम कर सकता है. सो दोनों का कॉम्बिनेशन लेके हमने एक एम्पलीफायर नया बनाया दैट, और उसको नाम दिया ऑपरेशनल एम्पलीफायर. और इसके बहुत बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे फेज शिफ्टर, वोल्टेज रेगुलेटर, ऑसिलेटर्स, पल्स जनरेटर्स जो पल्स को जनरेट करते हैं, ऑसिलेटर्स जो सिग्नल को जनरेट करते हैं, जो आपकी लैब में फंक्शन जनरेटर रखे हुए हैं, कंपेरेटर्स, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स, voltage to current, current to voltage converters, voltage followers, sample and hold circuits. तो ये सब आप धीरे धीरे आगे जाके पढ़ेंगे, बट ये सारे के सारे एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाए जाते हैं. बट इसको बहुत ज़्यादा डीप में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है. अभी सिर्फ आप बेसिक देखें. तो द सिंबल इज this. It is like triangular shape, and there are 2 inputs, 1 output. There is a sign of plus and minus. Minus means inverting input, plus means non-inverting input. Plus means non-inverting. Non-inverting means it will send the input as it is to the output. Inverting means it will invert the input. So here input 2 yani V2 is negative, that is called inverting input. Input 1 is called non-inverting input. And because of this differential circuit, you will get difference of V1 and V2 at the input. Means Vin will be V1 minus V2. So Vin is the input voltage and output voltage is Vout. So there is a relation between input and output voltage, that is Vout is equals to A into V1 minus V2, where A is the gain of the op-amp. Some of the op-amps are designed with inverting output also, means there will be 2 outputs, but we are not going to discuss that. We will discuss single output op-amp. Next, integrated circuit for the op-amp. There is a particular IC of this op-amp, and that particular IC is known as IC741, and it is explicitly used for op-amp.
Now if we see the circuit diagram of the op-amp, it is like that. Means two inputs, one output and two power supplies. Input is different. To make the op-amp functional, we have to provide external supply to it, that is VCC and minus VEE. These are supply voltage. It is the pin diagram of the op-amp. There are 8 pins. First is offset null, V2, V1, and it is V negative. V negative means this, VEE, and V positive means VCC. So V positive is applied on 7th, output is taken from 6th, and offset null, 8th is not connected. Offset null is you just leave it now. Offset null means whenever the input is not connected or only power supply is connected, there is some output. So to overcome that output, we have to provide some offset, and these offsets should be nullified. Means negative voltage should be applied here, but you just leave it as it is. You do not need to connect anything to offset. It does not give so much error, so just leave it right now. So I have told you that to operate the internal architecture of op-amp, which is designed by BJT, is required power supply voltages, that those are VCC and VEE. VCC, you know, the collector voltage, and VEE, you know, the ammeter voltage. VCC and VE are known as supply voltage for op-amp. VCC is always positive, VEE is always negative. That is why we have represented as them V positive and V negative. Those are always equal in case of op-amp, are always equal but opposite in polarity. One thing you should keep in mind, that in any case supply input voltage V1 and V2 should not be more than V positive and V negative in any case, otherwise your IC will be burnt. Okay, so next thing is basic specifications of op-amp. So we are discussing the open loop. Open loop means no feedback is provided. There are 4 basic specification. Voltage gain. The gain of the op-amp is very high. In case of practical op-amp, it is 10 to the power 6. So in ideal case, we assume it as an infinitive. The output resistance of op-amp is very low, that is 0. For ideal case, and for practical case, it is 75 ohm. The input resistance of op-amp is very high, again 10 to the power 6 ohm, that is infinitive in case of ideal op-amp. Bandwidth of the op-amp is again 10 to the power 6, so we also consider it is as infinity. So open loop means no feedback. Feedback, what is feedback? Feedback is the connection that is made between output and input. If output is connected to negative input or inverting input, means if output is connected to negative input, it will be called negative feedback. If output is connected to positive input, it will be called positive feedback. Now let us discuss the gain of the op-amp. So first, open loop gain. Open loop gain is represented by AOL. As we discussed earlier, that V1 and V2 are two voltages. The difference at the input is, the input voltage is V1 minus V2, and output voltage we get as the amplification of the input voltage, means V out is equals to V1 minus V2 into gain of the op-amp. Because it is open loop, means no feedback is provided. That is why AOL is output voltage by input voltage. Output voltage is V out, input voltage is V1 minus V2. Open loop means no feedback is provided. Again, I am telling you, no connection from output to input is made. For practical op-amp, the gain is 10 to the power 6, which is very high. Assume 10 to the power 6 means you are providing 1 here and you are getting 10 to the power 6 here. It is very high.
So we consider it as an infinity in case of ideal op-amp. When closed loop means feedback is provided, so let us first discuss the negative feedback. Means output is connected to negative. It means output is connected to inverting terminal or negative terminal. In this case negative feedback output gets decrease. देखो जब नेगेटिव फीडबैक आएगा तो नेगेटिव मीन्स वो हमेशा और एम्पलीफिकेशन किस में होगा, नेगेटिव पार्ट में होगा. तो जब भी आप इनपुट से आउटपुट में गए आउटपुट कम होगा, फिर वापस आओगे आउटपुट और कम होगा, तो आउटपुट कम होता जाएगा धीरे धीरे. आउटपुट विल बी डिक्रीजिंग. सो जो अगर हम लूप चलाएंगे तो हर बार आउटपुट कम होगा. सपोज फर्स्ट पहली बार 100 था, दूसरी बार 80 हुआ, फिर 60, फिर 40, फिर 20, फिर 10 एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि वो 0 हो जाएगा. इट विल बी डिक्रीजिंग. मोर नंबर ऑफ लूप्स इज गोइंग ऑन, इट विल decrease. Means more number of cycles output will decrease because it is applied to feedback is applied to negative terminal. तो that is why it is called negative feedback. जैसे आप अगर क्लास में आप कोई बच्चा हो और वो उसका फीडबैक हमेशा निगेटिव आए तो उसका डीमोलराइजेशन होता रहेगा. इसी ऐसे ही सेम यहाँ पर है. किसी भी एम्पलीफिकेशन में किसी भी एम्पलीफायर में अगर उसको आपने निगेटिव फीडबैक दे दिया, यानी कि उसका आउटपुट जो फर्स्ट टाइम था सेकंड टाइम जो अब आप उसको देखोगे तो वो आउटपुट निगेटिव हो जाएगा, यानी कि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा. तो जब इनिशियली हम देखते हैं इनिशियली विदाउट एनी फीडबैक द गेन वाज ओपन लूप गेन वाज 10 to the power 6. बट हर बार गेन क्या होगा इसका कम होता जाएगा. आउटपुट बाय इनपुट आउटपुट कम होगा तो गेन कम होता जाएगा. तो गेन 10 to the power 6 से कम होता जाएगा जितनी बार आप साइकिल में घूमोगे, इसको साइकिल को चलाओगे. तो मैक्सिमम क्लोज लूप गेन ACL नेगेटिव क्यों है, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है. CL मीन्स क्लोज लूप. For ideal op-amp is 10 to the power 6 which will decrease after each input to output cycle. Hence maximum gain will be 10 to the power 6. So we can also consider it as infinity. So for ideal op-amp ACL for negative feedback is infinity. And op-amp behaves as an amplifier in negative feedback. That is one of the most important thing. अगर आपको op-amp को as an amplifier work कराना है तो आपको negative फीडबैक उसको देना होगा. निगेटिव फीडबैक देते ही वो स्टेबल हो जाएगा. इस एम्पलीफिकेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें स्टेबिलिटी की जरूरत पड़ती है, और स्टेबिलिटी कब मिलेगी, जब आप उसको निगेटिव फीडबैक प्रोवाइड कराओगे. ऐसे ही बीजेटी में आप अगर क्योंकि वो हमने उसकी बायसिंग नहीं पढ़ी है, तो आप अगर आप उसको आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम उसमें एक नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड कराते हैं बीजेटी में ताकि उसका एम्पलीफिकेशन और इंक्रीज हो जाए. मोस्ट ऑफ द op-amp सर्किट्स आर डिजाइन विद नेगेटिव फीडबैक. जितने भी op-amp के सर्किट्स हैं जो मैंने अभी पीछे बताए थे, जो कि एडिशन हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ या कोई भी सर्किट हुआ, जितने भी सर्किट्स हैं ये सारे के सारे सर्किट्स नेगेटिव फीडबैक के होते हैं एक्सेप्ट ऑसिलेटर. ऑसिलेटर मीन्स जो फंक्शन जनरेटर है, जो सिग्नल को प्रोड्यूस कर सकता है, उसके लिए हमें पॉजिटिव फीडबैक देना पड़ेगा. और इसको हम देखते हैं कि इससे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज वर्चुअल ग्राउंड. वर्चुअल ग्राउंड, एक बात ये ध्यान रखना, VGP इज वर्चुअल ग्राउंड प्रोसेस. इट इज ओनली एप्लीकेबल इन op-amp and it is only applicable for open loop op-amp and with negative feedback. It is not applicable in positive feedback in any case. देखो अब होता क्या है, हमने दो गेन देखे थे, AOL and ACL नेगेटिव. आइडियल कंडीशन में ये गेन इनफाइनाइट हैं, ठीक है. तो AOL इज इनफाइनाइट, V1 माइनस V2 इंटू AOL इज V आउट. अगर मैं इनफाइनाइट को 1/0 से रिप्लेस करूं सो मुझे मिल जाता है 1/0 इज इक्वल्स टू V आउट, यानी कि V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू 0. इट मीन्स V1 इज इक्वल्स टू V2. तो होता क्या है कि जो हमारे इनपुट हैं वो दोनों इक्वल हो जाते हैं. तो इक्वल अगर कोई चीजें अगर कोई भी दो टर्मिनल के बीच में वोल्टेज इक्वल होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्टेड हैं, यानी कि शॉर्ट है और ग्राउंड है. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल ग्राउंड प्रोसेस.
it means whatever input is applied at non-inverting terminal. What is non-inverting terminal? Non-inverting terminal is positive terminal, यानी कि जो भी इस पॉजिटिव टर्मिनल पे आएगा वोल्टेज वो एज इट इज इन्वर्टिंग टर्मिनल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो V2 की वैल्यू है वो हमेशा क्या इक्वल होगी? V1 के इक्वल होगी. So this is called virtual ground process and it is very very important in case of op-amp. Next, now we should discuss the positive feedback. In case of positive feedback, output is connected to non-inverting terminal. As I told you, output is connected to non-inverting terminal, positive. If output is connected to positive, it means gain will increase with each cycle. So minimum gain with the op-amp open loop was 10 to the power 6. अब जितनी बार भी साइकिल चलेगा तो गेन क्या होगा? 10 टू द पावर 6 से ज्यादा होगा. अगर आपने सपोज ओपन लूप के केस में इनफाइनाइट मान लिया और दूसरी बार आपने लूप चलाया तो इनफाइनाइट से ज्यादा. इनफाइनाइट से ज्यादा क्या होगा? कुछ नहीं. इनफाइनाइट से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम इनफाइनाइट नहीं मान सकते आइडियल कंडीशन में. इन केस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, गेन ऑफ op-amp increases with every cycles, means minimum gain of ACL positive. ACL positive means positive feedback is 10 to the power 6 and with every cycle again will be more than 10 to the power 6. With every cycle, जितनी बार आप मूव करेंगे लूप में उतनी बार गेन 10 to the power 6 से ज्यादा होगा. Now it cannot be treated as infinite. So that is the main reason virtual ground process is not applicable for positive feedback, because gain cannot be infinite in case of positive feedback. It will be some finite value. So 1 by 0 is not applicable in case of positive feedback. So gain of op-amp in positive feedback is more than 10 to the power 6, which cannot be treated as infinitive, because for one cycle you take it suppose 10 to the power 6, in next cycle it becomes suppose 10 to the power 8, means more than infinitive, and nothing can be more than infinitive. And this positive feedback is used for oscillation purpose, means more and more stability will be there. हर बार जितना ज्यादा गेन होगा उतनी ही अनस्टेबिलिटी होगी, और हमें ऑसिलेशन के लिए क्या चाहिए? स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी चाहिए. जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा, जितने ज्यादा हार्मोनिक्स होंगे उतना ही ज्यादा ऑसिलेशंस होगा. तो एम्पलीफिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए? स्टेबिलिटी, और ऑसिलेशन के लिए हमें क्या चाहिए? अनस्टेबिलिटी. सो एक ही डिवाइस को हम एम्पलीफायर की तरह भी यूज कर सकते हैं और ऑसिलेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं. दैट इज व्हाई दिस op-amp इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स पर्पसेस. और हम इसका और कहाँ यूज कर सकते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल, जैसे साइनोसॉइडल सिग्नल, ट्रायंगुलर सिग्नल, रेक्टेंगुलर पल्सेस, ये जितने भी सिग्नल्स हैं ये हम इस op-amp से जनरेट कर सकते हैं by providing it positive feedback. So there are two things. अगर हमने ओपन लूप में लिया तो आउटपुट पर डिफरेंस मिलेगा हमें इनपुट का. अगर हमने निगेटिव फीडबैक दिया तो op-amp एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा. अगर हमने पॉजिटिव फीडबैक दिया तो op-amp ऑसिलेटर की तरह वर्क करेगा. Now there are some important points about op-amp. This is the basic theory. So first, op-amp is the operation amplifier which amplifies the input signal to output signal, providing very very high gain. Second, open loop gain and gain of op-amp while connecting in negative feedback is 10 to the power 6, which is extremely high and is considered infinity. Third, op-amp performs mathematical operations such as summation, subtraction, integration, differentiation, and also amplification circuits while connected in negative feedback, not in positive feedback. And op-amp behaves as an oscillator while connecting in positive feedback. Gain of op-amp is positive feedback is always more than 10 to the power 6. Fifth point, that is one of the most important point, that VGP, virtual ground process, is applicable only and only in case of open loop and negative feedback, not in case of positive feedback.
Sixth point, input resistance of op-amp is 10 to the power 6 ohm. That is again very high. 1 mega ohm is infinitely high. You can consider it as infinity. So it means at the input op-amp is open circuited. Means if the input resistance is very high, means it is open circuited. It means no current can enter. It means no current can enter in the op-amp. We will see this point again and again. There are two conditions: virtual ground process, and second condition is current cannot enter inside the op-amp in any case because of high input impedance or high input resistance. So input current inside the op-amp is almost negligible, which is always considered zero.